We have completed introduction to alkaloids, two drug from alkaloids, then introduction of glycosides, and two that digital is from that cardiac glycosides. So remaining glycosides we are going to see in this lecture. So what is important from these points we will see. The first one is nothing but your anthraquinone glycoside. As I have told you, there are different kind of glycosides depending upon the type of A glycone present in the structure. So it may be either steroid nucleus, it may be either cardiac glycosides, it may be either anthraquinone glycosides, it may be either glycosidal bitter, it may be either steroid glycoside, it may be either your saponin glycosides. We are going to see that. So first one is your anthraquinone glycosides. As the name indicate, anthraquinone. As the name indicate, anthraquinone means what? Anthra means anthracene ring. So in this glycoside, you will have anthracene ring. So anthracene ring is nothing but the two benzene ring attached together. They are known as anthracene ring. Okay. So anthraquinone. What about one? One means ketone. So anthracene ring, two ketone groups. They are nothing but the anthraquinone. So it will become anthraquinone. So these glycosides will have a anthraquinone ring in their structure, in their A glycone part. So as you know that glycosides are made up of two parts. Okay, A glycone part and glycone part. So A glycone part, they are depending on the type of A glycone, your glycosides are classified in numerous classes. Okay, so A glycone part means genin part. It is also known as genin part, and glycone part is nothing but the sugar portion. So they are either attached by alpha or beta configuration, but most of the time in the plants they are attached with the beta configuration, means they are a beta glycosides, not a. So in the anthraquinone glycoside, this one drug is very important. This Senna, Indian Senna. This drug is very important because you see in the 2019 there was a question on this Senna, and most of the time they used to ask the question on Senna. It is a very important drug. So Senna, Indian Senna, is also known as Indian Senna. So what are the different synonyms for this Indian Senna? So it is also known as Senna leaf, Senna folium, Senna ki patti, Tinivali Senna, Cassia Senna. All these are the synonyms for Senna, Indian Senna. Senna leaf, Senna folium, Senna ki patti, okay, Tinivali Senna, Cassia Senna. All are the synonyms. Now what is the biological source of this Indian Senna? So it is nothing but the dried leaflets. So here you should know what is the difference between leaf and leaflet. So you have to read it somewhere else. Okay, you can read from the books, leaves and leaflets. So leaflets, they are in a pairs. Leaves are they appears in a single. Leaf is a single entity. Leaflets are nothing but they appears in a pairs. So अगर आप नीम के पत्ते लेंगे, देखो नीम के पत्ते कैसे एक के साथ एक में के साथ पेयर में रहते. नीम इज नॉट लीफ, इट इज अ लीफलेट. और आप अगर किसी और का पत्ता लेंगे, फॉर एग्जांपल आप वसाका का, दैट इज अ लीफ. Leaflet is nothing but leaflets are nothing but they appear in the pairs. Okay, so it is a dried leaflet of Cassia angustifolia family Leguminaceae. Cassia angustifolia family Leguminaceae, and it should not contain not less than 2% of anthracene glycoside, calculated as sinusoid B. So in this Senna there are different sinusoids, sinusoid A and sinusoid B. Sinusoid B is medicinally important. Remember, sinusoid B is medicinally important. इसी की वजह से इसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, नॉट लेस देन 2% ऑफ एंथ्रासिन डेरिवेटिव कैलकुलेटेड एज सेनोसाइड बी. इसमें सेनोसाइड बी का बी इंपॉर्टेंट है, सेनोसाइड बी दैट हैज अ मेडिसिनल वैल्यू, राइट. सो जस्ट रिमेंबर इट इज अ कैसिया अंगुस्टिफोलिया फैमिली लेगुमिनासी एंड इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 2% ऑफ एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड नोन एज अ सेनोसाइड बी, राइट. सो this is geographical source. It is not much important. Geographical source is not much important, but still you should know it. So mostly this Senna is cultivated in the southern region of India. So whatever the south region of India is there, it is cultivated in that. For example, Tinnevelli, then Madurai, Ramanathapuram district of Tamil Nadu, then Kadapa district of Andhra Pradesh, and some part of Kutch in the Gujarat. So mostly it is cultivated in the South India, right? So your Tamil Nadu and your Andhra Pradesh. Okay, so Tinnevelli, Madurai, Ramanathapuram district. So that's why sometimes it is known as a Tinnevelli Senna, because it is mostly cultivated in these three districts: Tinnevelli, Madurai, and Ramanathapuram. That's why it is known as Tinnevelli Senna. This cultivation collection is important. So in the cultivation collection, what is important? So what type of soil is required for the
growing of this senna. So red loamy, Chaco's gravelly soil is required. Red loamy means लाल माती, लाल जमीन लगती है. Okay, Chaco's gravelly, then it can grow in the alluvial loamy soil. Cultivation of this plant, you must have to plug your field properly. You have to level the field. Then you have to sow the seeds. Then you can sow the seeds. Sowing of seed can be done after that. So sowing of seed can be done by broadcasting method. So here is a broadcast. There are different methods. Broadcasting method means you just have to take a seed in hand and you just have to throw it in the field. So that is nothing but the broadcasting method. Okay, in the February March you have to do first sowing of seeds. In the October November after the rains, then second sowing. Okay, increase the germination of seed. It can be abrased with the sand. ठीक है, ये इसके जो सीड्स होते हैं वो सीड्स आपके रेती के साथ मिक्स करना है और उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से ट्राइचुरेट करना है ताकि वो सीड्स का एब्रेजन हो जाए, मतलब सीड का थोड़ा सा ओपन हो जाए वो सीड, ताकि वो उसका जर्मिनेशन वेरी फास्ट मतलब जल्दी हो जाए. ठीक है, सो इट कैन बी मिक्स्ड विद द सैंड एंड abrased to increase the germination. As it is a semi-irrigated plant, remember it is a semi-irrigated plant, means it will not require full of water. It is semi-irrigated. मध्यम पानी उसको चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. It is a semi-irrigated plant. Okay, semi-irrigated plant after 3 months of growth of sowing. So just 3 महीने में ही उसका आ जाता है कल्टीवेशन, पूरा कलेक्शन के लिए रेडी हो जाता है 3 महीने. So it is a semi-irrigated plant. Okay, so leaves are harvested when the leaflets are thick, fully grown and greenish in the color. Okay, senocide content is maximum in the leaves which are fully grown and goes on decreasing after maturation of pod. जैसे उसका ग्रीन कलर है, ग्रीनिश कलर है, तो उसमें सेनोसाइड का कंटेंट ज़्यादा रहता है. जैसे उसका कलर लाइट हो जाता है या फिर उसका मैच्योरिटी हो जाता है प्लांट का, तो सेनोसाइड कंटेंट कम हो जाता है. आफ्टर दैट उस टाइम पे उसको कलेक्ट करना है. ठीक है, आफ्टर कलेक्शन leaflets are dried in the doer by spreading them on a layer and then it is packed in the bales under ideal pressure. Now, what was the question in GPAT 2019 regarding the cultivation and collection of senna? Okay, so they were asking the question like this: short-term drought in the senna causes, and there was a 4 option. They will increase the senocide content, they will increase the senocide A content, they will increase the senocide B content, like this. Okay, there was option. So what happens in the senna? Short-term drought increases the senocide content of senocide A and senocide B, but senocide A is not important to us. Whenever there is senocide, both are mentioned, it's okay, then you have to answer both. But if it is not both are not mentioned, only senocide B. So what is meant by short-term drought? So short-term drought means क्या होता है कि देखो आप क्या करते हो, कोई भी मेडिसिनल प्लांट लगाते हो कल्टीवेशन के लिए, तो उसका ग्रोथ होता है, जर्मिनेशन होता है, ग्रोथ, उसको प्रॉपर पानी तो लग जाएगा, उसका जब मैच्योरिटी आता है पानी तो लगेगा ना उसको, विदाउट वाटर कैसा होगा उसका. तो शॉर्ट टर्म ड्रॉट मीन्स क्या, कुछ समय तक उसका पानी बंद करना. तो पानी देते हैं अपन, तो उसको बंद करना है कुछ समय तक के लिए. ओके, दैट इज नथिंग बट द शॉर्ट टर्म ड्रॉट. तो वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म ड्रॉट इंक्रीजेस द सेनोसाइड कंटेंट इन द प्लांट. बट व्हाई, क्या होता है कि आप जब पानी बंद कर देते हो प्लांट का, तो प्लांट में मैच्योरिटी जल्दी आता है, मतलब मैच्योरिटी जल्दी मैच्योर होता है. ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है पानी नहीं है अभी. तो शॉर्ट टर्म ड्रॉट इन द सेनोसाइड, short term drought in the senna will increase the content of senoside, right? And this was question in GPAT 2008 because it is a semi-irrigated plant or it is a light irrigated crop. So it is a semi-irrigated or light irrigated crop. So just remember, short term drought in case of senoside will increase the senoside content. Now microscopic characters. What is important for microscopy? So just forget about all the things. Just remember this. It is an isobilateral leaf. Then it will have just rubeaceous or parasitic stomata means what? So parasitic stomata or rubeaceous stomata. Parasitic stomata means what? When the axis is parallel to the stomatal opening and guards it. That is nothing but parasitic. यह मैंने बोला था पहले लेक्चर में, कैसे होता है, कितने टाइप के स्टोमेटा होता है, पैरासाइटिक, डायसाइटिक, कैरियोपाइलस, एनिसोसाइटिक, अनोसाइटिक. So just remember rubeaceous or parasitic. Cluster of calcium auxiliary crystal, parasitic stomata, isobilateral leaf. Okay, and then spongy parenchyma. Spongy parenchyma is important part.
These are found in the any microscopy of leaf. That leaf belongs to senna, right? So presence of cluster of calcium oxalate, then spongy parenchyma, rubaceous or parasitic stomata, cluster of calcium oxalate. So these are the important microscopic characteristic of senna. I'm not going to explain all the things. Whatever is important for GPAT, that is only discussed here. So just remember, short-term drought increases the sinusoid content, and try to remember the important points from microscopic character like rubaceous or parasitic stomata, cluster of calcium oxalate, spongy parenchyma, then isobilateral leaf, then thick warted trichomes. So ये थोड़ा सा याद रखिए. बाद में क्या आता है, उसका आता है chemical constituents. So next important point is chemical constituents of senna. Now there are two glycosides present in the senna, sinusoid A and sinusoid B. Okay, so just remember there are two glycosides, sinusoid A and sinusoid B. So out of these two, sinusoid B is responsible for its medicinal value, or sinusoid B is responsible for the purgative property of senna. So because senna is purgative, it is used as a laxative or purgative. Medicinal property or medicinal value of this senna plant is because of the sinusoid B. Remember, sinusoid B is very important. Then again, sinusoid A and sinusoid B, both these are nothing but they are the stereoisomers of each other. Sinusoid A and sinusoid B, they are nothing but the stereoisomers of each other. They are dimeric glycoside with a rehin dianthrone as a glycon. I will explain this, what is dimeric glycoside and rehin dianthrone. Don't worry, in upcoming slide. ये एक glycon part जो है उसको बोलते हैं rehin dianthrone. और dimeric means they have exactly two structure. They have exactly two similar structure. That's why they are known as dimeric glycosides. Okay, try to remember this. I will explain this again. Don't. This 10 which 9-10 dihydro 1 dihydroxide oxyanthracene 3 carboxylic acid. That is nothing but the dianthrone a glycon. It is a IUPAC name for it is IUPAC name of dianthrone. That's it. Then a glycon part of sinusoid A. This is important. A glycon part of sinusoid A is a dextrorotatory and sinusoid B is a mesoform. This can be asked in the exam. Again, this can be asked in the exam. So which property is responsible for the purgative action of senna? Sorry, which constituent is responsible for the purgative property of senna? That is nothing but the sinusoid B. Then they are the stereoisomers of each other with rehin dianthrone as a glycon. Then again, sinusoid A is a dextrorotatory, sinusoid B is a mesoform. Okay, so a glycon part. Again, along with these two A and B, sinusoid C and D are also present in the senna. Heterodianthrone. Heterodianthrone means what? यहाँ पे two exactly same dianthrone नहीं है, यहाँ पे अलग अलग. Again, along with this, rehin, aloe, rehin, 8-glucoside, camphorol also contain physosterol and mucilage and all that. Okay? So these are the important chemical constants. So remember sinusoid B, then stereoisomers, then its stereochemistry. They can either ask you question like that: what is the stereochemistry of sinusoid B? So it is a meso. What is stereochemistry of sinusoid A? It is a dextro, right? Likewise, that they can ask the question on this. Now, what is the use of this senna plant? So it is a purgative in a habitual constipation. It is a purgative in a habitual constipation. So what do you mean by constipation? Constipation, if you are not able to pass your feces, then it is nothing but the constipation. Constipation क्या होता है? अगर आप टॉयलेट नहीं हो रहा है आपको, उसको बोलेंगे constipation. Now टॉयलेट होने के लिए क्या करते हैं? There are 3 terms: purgative, laxative. First term is laxative, purgative, and third term is a saline cathartic. Okay, so there are 3 different terms related to your defecation process. So those agents which will increase your defecation process, उसको बोलेंगे laxative. So laxative is the chemical substance, or laxative are the drugs that will increase the stool formation. But that stool will not be liquid stool. That will be a solid stool, and that will not be much hard, but it will be soft stool, but it is a solid stool. So those agents which will increase the formation or which will increase the defecation process by forming a soft stools, it is known as a laxative. Then what is meant by purgative? Purgative means those agents which will increase the defecation process by forming a little bit watery stool or semi-solid stool.
that is known as a purgative. And then what is meant by saline cathartics? If any drug is able to increase the defecation process by forming a watery stool. डायरिया में कैसे होता है? डायरिया में देखो आप, जैसे आप टॉयलेट में जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से निकल गया सब कुछ, पूरा निकल जाता है. क्या होता है? उसमें सिर्फ वाटरी स्टूल होता है. Any agent is able to create a watery stool, that is known as a saline cathartic. If any agent is able to create a soft stool, solid soft stool, easily defecation process will be easy. That is nothing but the laxity. And what is meant by purgative? If any agent is able to increase your defecation process with semi-solid stools formation, that is nothing but the purgative. Here are three terms. You must be clear about these terms. So okay, that's why this senna is purgative in nature. It will irritate your GIT. It will irritate your GIT, and that's why it will stimulate your GIT. Irritation, reflex stimulant. It is a reflex stimulant. It will irritate and it will stimulate your GIT. Remove the gastric content, or to remove the content in the intestine. So it is a purgative. Then first of all, it is absorbed in the stomach. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेनेसाइड जो है, सेनेसाइड बी, ये आपके इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाएगा. उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और फिर से हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक ग्लाइकोन पोर्शन सेपरेट हो जाएगा. ग्लाइकोन. सो एक ग्लाइकोन पोर्शन अगेन वहाँ पे क्या करेगा, सीक्रेट हो जाएगा ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन, और वहाँ पे वो उसको जो इंटेस्टाइन है उसको इरिटेट करेगा और वो स्टूल फॉर्मेशन करेगा, इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस और इंक्रीज द डिफेकेशन. ओके, सो इन दैट दिस griping, okay, again this griping effect is due to the griping effect of senna is due to the resin or imodine content. So ये नाइपर GPAT में पूछते. Now what is the identification test for senosides? So just remember Braun-Trager test. Braun-Trager test is a test for identification of your senosides. What is that test? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, टेस्ट क्या है इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कौन सा टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट. ठीक है, कौन सा है? Braun-Trager टेस्ट. पाउडर ड्रग प्लस उस पाउडर ड्रग जो है आपका सेनोसाइड का, मतलब जो भी सेना का पाउडर है, उसमें आपको HCl डालना है, H2SO डालना है, ताकि उसका हाइड्रोलिसिस हो जाए. उसके बाद वो एक्सट्रैक्ट करना है आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से. उसके बाद उसमें अमोनिया डालना है. ओके, तो अमोनिया जैसे डालेंगे उसको अमोनिकल लेयर विल शो पिंक और रेड और वायलेट कलर. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन. ओके, सो एंथ्राक्विनोन, not anthraноls. Anthraноls are the reduced form of anthraquinone. That's why anthranol will not give Braun-Trager test positive, but anthraquinone will give. Anthraноls are reduced form of anthraquinone. This senna is adulterated with different forms, different varieties of senna. So adulteration and substitution. So tinivali senna is adulterated with. There are different varieties of senna that can be used as adulterant. So you must be able to distinguish them. First one is a dog senna. So dog senna is also known as a Cassia ovovata. Dog senna is known as Cassia ovovata. It can be distinguished by these papilloma cells in the lower epidermis, and it contains only 1% of glycoside. ये बाकी डिस्टिंग्विश में क्या होता है ये भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना याद रखो कि जो ओरिजिनल सेना ड्रग है आपका वो अडल्ट्रेट करते हैं किससे? डॉग सेना से. डॉग सेना क्या है? कैसिया ओवोवेटा. अनदर इज अ पाल्ते सेना. पाल्ते सेना क्या है? कैसिया ऑरिकुलाटा. सो ये दो ड्रग है. अलॉन्ग विद कैसिया ऑरिकुलाटा इज हैविंग absence of anthracion glycoside. इसमें anthracion glycoside होता नहीं है. Then again there are different varieties which can be used as adulterant, like Bombay senna, Mecca senna, then Arabian senna. Okay. Then again there is one more plant known as a Coreria multifolia. Coreria multifolia. It is a highly poisonous plant, and its presence in your original drug should be recognized. क्योंकि ये poisonous drug है, इसका अगर आपकी सेना में होगा और आपने अगर खा लिया सेना का चूर्ण या फिर सेना का पाउडर या फिर सेना का टैबलेट खा लिया और उसमें ये प्लांट भी एज अ अडल्ट्रेंट या फिर इम्प्योरिटी है, तो मतलब आपको आपने खाया लैक्सेटिव एक्शन के लिए, लेकिन आपको ये पॉइजनिंग हो जाएगा. दैट्स व्हाई अडल्ट्रेशन प्रिवेंट करना रहता है, अडल्ट्रेशन आइडेंटिफाई करना रहता है. ठीक है. सो डॉग सेना, पाल्ते सेना, बॉम्बे सेना, मेका सेना, अरेबियन सेना, देन दिस कोरिरिया मल्टीफोलिया, ऑल दीज आर द अडल्ट्रेंट फॉर योर सेना. There is another variety of senna known as Alexandrian senna. So what we have seen is the Cassia senna. What we have seen was the
KCSN, अपन ने जो देखा है उसको बोलते हैं KCSN और इंडियन सन। अभी नाउ दिस सेकंड वैरायटी इज नोन एज अलेक्जेंड्रियन सन। ये क्या कौन सा है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है, so that's why इजिप्ट में पाया जाता है इसको, that's why it is known as Egyptian senna, Cassia senna senne, folia senne. Okay, so it is a dried leaf of Cassia acutifolia, family leguminosae. Rest of the things are similar to the Cassia. तो ये होता है सेन्ना का प्लांट, आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं भी बहुत जगह पे है ये सेन्ना पे। Okay, so now what is meant by dianthron, and you can see here the structures. Okay, so it is a actually this half structure is a structure of imodine। जो अगर यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से बीच में से, तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इमोडीन। नाउ व्हाट इज डायंथ्रोन? डायंथ्रोन मींस टू स्ट्रक्चर ऑफ इमोडीन जॉइन टुगेदर। अगर ये दो स्ट्रक्चर एक में साथ जॉइन हो गए तो ये हो गया डायंथ्रोन। ये देखो आप यहाँ से ऊपर देखो सिमिलर स्ट्रक्चर नीचे भी, तो ऊपर का जो आधा उसको बोलते हैं इमोडीन, और वो इमोडीन दोनों साथ में मिलेंगे तो उसको बोलते हैं इमोडीन डायंथ्रोन। ओके, नाउ सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी। ओके, सो सेनोसाइड ए इज इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हियर यू कैन सी हियर इज ये जो हाइड्रोजन है वो देखो इट इज अ डेक्स्ट्रो, इट इज सेनोसाइड बी इज अ मीजो कंपाउंड। ठीक है, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से उसका एक ग्लाइकोन पार्ट अटैच होगा सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी। यहाँ पे देखो शुगर है, यहाँ पे शुगर अटैच हुआ, यहाँ पे शुगर अटैच हुआ। सो इट वाज अबाउट ऑल द सेन्ना। नाउ नेक्स्ट वन इज अ rhubarb. Rhubarb also consists of anthraquinone glycosides. So what do you mean by anthraquinone glycosides? So anthracene ring, ये तीन बेंजीन रिंग अगर एक के साथ अटैच होंगे तो उसको बोलते हैं एंथ्रासिन। ठीक है, तीन बेंजीन रिंग 1 2 3 अटैच हो गए उसको बोलते हैं एंथ्रासिन। अगर दो होंगे तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, अगर दो बेंजीन रिंग है सिर्फ तो उसको बोलेंगे नेफ्थलीन, तीन है तो उसको बोलेंगे एंथ्रासिन। ये आपके हेट्रोसाइक्लिक में हो गया होगा आपको, या फिर जब भी मैं पढ़ाऊंगा या फिर जो भी दूसरे सर पढ़ाएंगे वो आपको बोलेंगे व्हाट डू मीन बाय एंथ्राक्विनोन। सो दिस इज एंथ्रासिन रिंग, यहाँ पे देखो कीटोन है यहाँ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंथ्राक्विनोन, एंथ्रासिन रिंग विद कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट वन इज अ rhubarb। ओके, सो इन केस ऑफ rhubarb आल्सो देयर इज एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स। इसमें कैसा है देखो, आपको ये जो ग्लाइकोसाइड्स है ये जीपैट के सिलेबस में है, आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना पूरा मैं ले रहा हूँ, ज्यादा ही ले रहा हूँ। ठीक है, so rhubarb another drug is a rhubarb what is mean by rhubarb? It is also known as a radix rheum or ravandachini. Remember, ravandachini is the name of rhubarb. Now what is rhubarb biological source? So it is a dried rhizome of rheum imodi, that is known as Indian rhubarb, or dried rhizome of rheum palmatum. Dried rhizome of Rheum imodi, Rheum palmatum, or Rheum webianum. Out of this Rheum imodi is known as Indian rhubarb, Rheum webianum is known as a Chinese rhubarb. All belongs to family Polygonaceae. So it is a biological source. Forget about the cultivation, collection, and microscopy. Not important. Just try to remember the chemical constants. So again, rhubarb has a anthraquinone glycosides. Okay. So anthraquinone, their glycosides are divided into anthraquinone with carboxylic group, anthraquinone without carboxylic group, anthrones and dianthrones. So anthraquinone with carboxylic group, ये सब छोड़ो, इतने से इतना याद रखो, इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, उसका नाम है रेहिन, ग्लूकोरेहिन, इमोडीन, क्राइसोफेनॉल, आइसिकोन, लाइक दैट। इसमें का मेन जो ग्लाइकोसाइड होता है rhubarb में वो होता है palmidine A and palmidine B and palmidine C. There are 3 glycosides, palmidine A, B, C. So palmidine A is nothing but the aloeimodine plus imodine. Aloeimodine plus imodine anthrone. Then palmidine B is nothing but the aloeimodine plus chrysophenol. Palmidine C is nothing but the aloeimodine plus palmidine C is nothing but the imodine anthrone plus chrysophenol. So chrysophenol plus imodine, palmidine C. Aloeimodine plus chrysophenol, palmidine B. Aloeimodine plus imodine anthrone, palmidine A. Okay. Now again, this astringent part of this rhubarb consists of gallic acid, glucogallin, tannin, catechin, epicatechin. So इसमें आपका tannins भी होगा कुछ. Actually, it is a glycosidal plant, but it also has some tannin content, and because of that, it has a astringent activity. Astringents means what? Those will precipitate your protein.
Then astringency of rhubarb is due to the particular tannin, that is a ribotanic acid. So ribotanic acid is responsible for the astringency of this rhubarb. जो भी astringent property है rhubarb का वो कौन किसकी वजह से है? रिबोटैनिक एसिड की वजह से. बस इतना याद रखो. इसके अगर इसमें कैसा है एक आधा क्वेश्चन आ भी सकता है. So what is the use of this? It is a bitter, it is a stomachic and purgative. Stomachic means yesterday I have already explained this. Stomachic means that will increase your gastric acid content. अगर आपके gastric acid बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे stomachic. Gastric acid बढ़ रहा है मतलब hyper acidic नहीं कर रहा है वो आपके digestion में help कर रहा है. आपके जो gastric content है उसको बढ़ा रहा है तो obviously आपका digestion बढ़ेगा. So those drugs which will increase the content of your gastric juice, they are known as the stomachic. Those which will increase the content of saliva, that is known as CLOCO. So there are simple terms. Okay, then it is also used as a purgative. So again here modified Brown Tracker test. ये क्या होता है Brown Tracker test और modified Brown Tracker test? ये upcoming slides में मैं आपको बोलूँगा. There are 2 slides on the test of glycosides, identification test of glycosides. There are 2 slides. Solely उसके ऊपर 2 slides है, वो slides मैं बोलूँगा आपको. तो जब modified Brown Tracker और Brown Tracker आएगा, ठीक है. So इतना याद रखिए कि Brown Tracker test is for C glycosides. Brown Tracker test is for O glycosides and modified Brown Tracker is for C glycosides. ये छोड़ो उसको. Now allied drugs. तो उसके दूसरे कौन से वैरायटी है ये rhubarb के. So इंडियन rhubarb और हिमालयन rhubarb और रेवंचनी. ये अपना इंडियन rhubarb और हिमालयन rhubarb और रेवंचनी एक वैरायटी है. Then रेहम वेबियानम चाइनीज जो वाला है वो चाइनीज वाला. Then रेहम इमोडी है ये नेपाल में पाया जाता है. Then again लास्ट में रेपनोटिक rhubarb. ये इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था. What is रेपनोटिक rhubarb? So it is obtained from Rehem rapnoticum, which consists of a rapnoticin. So it is a crystalline glycoside. It is a estrogenic. So it is estrogenic means what? It will behave like a estrogen, or it will combine with estrogen receptor and will increase the activity of estrogen. So that's why it is a estrogenic. कौन सा estrogenic है? Rapnoticin. Okay. So rapnotic rhubarb में क्या होता है? Rapnoticin नाम का एक glycoside होता है. And that is acting as a estrogenic. So जो आपका स्टिल्वियन है, स्टिल्वियन रिंग होता है, इसके जैसे एक्ट होता है. Okay. So ये एक बार पूछा था. Rapnotic rhubarb consists of rapnoticin and that is a estrogenic in nature, right? So it has a 3,3-4,4,5 tetrahydrostilbene ring in the structure. ये स्टिल्वियन रिंग क्या होता है? जब आप ये देखेंगे क्या स्टेरॉइडल ड्रग तब आपको पता चलेगा. इतना याद रखो कि रेपनोटिक rhubarb एक वैरायटी है rhubarb का, उसमें एक कंटेंट रहता है, उसका नाम है रेपनोटिसिन. तो वो क्या करता है? एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी दिखाता है. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है. ये देखो इमोडिन, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इमोडिन. सो इट इज अ अलो इमोडिन. देन दिस इज क्राइसोफेनॉल, दिस इज फाइसिकॉन. सो ऑल दीज आर द एंथ्रोन्स. एंथ्रोन्स मीन्स व्हाट? एंथ्रासिन रिंग विथ कीटोन ग्रुप. So they are known as anthrones. Okay. So इमोडिन में क्या होगा? इमोडिन में क्या होगा? ये देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें साइड में. तो अलो इमोडिन में क्या होगा कि उसमें ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी जगह पे अल्कोहल आ गया. क्राइसोफिनॉल में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप आ गया. फाइसिकॉन में क्या होगा? यहाँ पे कीटोन ही है. ऐसा ये इतना स्ट्रक्चर है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर ये दो स्ट्रक्चर एक में के साथ जुड़ जाएंगे उसको बोलेंगे इमोडिन डायएंथ्रोन. अगर इसका 2 स्ट्रक्चर बनेगा एक में के साथ उसको बोलेंगे अलो इमोडिन डायएंथ्रोन. ठीक है, अगर ये 2 स्ट्रक्चर एक में के साथ जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे क्राइसोफेनॉल डायएंथ्रोन. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज अ कैस्केरा. So it is known. Next one is cascara. It is also known as a cascara sagrada. It is also known as cascara sagrada or sacred bark or chittam bark. Okay, so all these are the synonyms: cascara sagrada, sacred bark, chittam bark, then purush blackthorn, then rami purshiani. So just remember these synonyms, not much important, so just forget about it. So what is the biological source of cascara? So it is a dried bark obtained from Rhamnus purshiana family, Rhamnaceae. तो इतना याद रखो कि Rhamnus purshiana, Rhamnaceae ये नॉर्थ यहाँ पे इंडिया में नहीं पाया जाता. So it is not found in India.
कभी कभी ये ज्योग्राफिकल सोर्स भी पूछ लेते हैं। लास्ट ईयर में आई थिंक 2019 में पूछा था पायरेथम का ज्योग्राफिकल सोर्स, वो केन्या था। तो ये याद रखोगे कि कौन सा प्लांट इंडिया में नहीं बनता है, नहीं कल्टिवेट होता है। तो इट इज अ कल्टिवेट इन नॉर्थ कोर्नोलिया, वाशिंगटन, कनाडा एंड केन्या, राइट। और टीएस इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जस्ट रिमेंबर दिस कैस्केरा कंसिस्ट ऑफ O glycosides along with C glycoside. This cascara consists of two glycosides, O glycoside as well as C glycosides. It is known as the cascarosides. Cascarosides A, B, C, D. Cascaroside D is having alpha configuration. Rest of the cascarosides having beta configuration. Okay. It also consists of barbaloins and all that. So it is used as a bitter, stomachic and purgative. It will give you modified Brown-Taker test positive. क्यों? क्योंकि मैंने बोला है Brown-Taker test होता है आपका C glycoside के लिए, modified होता है आपका O glycoside के लिए, ठीक है। ये अपन बाद में फिर से एक बार देख लेंगे। Next one is hypericum. Hypericum is also known as St. John wort or Milleportis or goatweed or St. John wort. So it is a dried aerial part of plant known as a Hypericum purpuratum family Hyperaceae, ठीक है। बाद में इसका ये जो यूरोपियन सोर्स है वो छोड़ दो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, naphthodianthrin like hypericin, it's a meso compound. Red fluorescent pigment is also there, pseudohypericin, hyperoxide and flavonoid like amintoflavone। इसमें सिर्फ इतना याद रखो, naphthodianthrin like hypericin होता है इसमें हाइपेरिकम में, ठीक है। हाइपेरिकम का सिनोनिम क्या है, St. John wort goatweed। इसका सोर्स है हाइपेरिकम पर्पराइडम हाइपेरेसी, इतना याद रखो। और उसका यूज है एंटी डिप्रेसेंट, न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया मीन्स पेन ड्यू टू नर्व, inflammation of nerve, that is known as neuralgia. Okay. Then menopausal neurosis, it is an antiviral against the HIV virus and hepatitis C virus. So hypericum. So they might ask you plant which is an antiviral plant. Now next one is aloe. Aloes जो है वो सबको मालूम है aloe, क्योंकि everybody is using this aloe vera leaves for cosmetic purpose and mostly the girls are using lot of aloe vera. So aloe is also known as aloe, musabar, kumari, or it is also known as aloe vera. So kumari, musabar, aloe, they can ask you the synonyms. Okay. So it is nothing but the dried juice of Aloe barbadensis. What is the biological source? Dried juice of Aloe barbadensis, Aloe peri or Aloe perax or other species. So Aloe barbadensis is nothing but the Curiaco aloe. Aloe peri is nothing but the Socotrain aloe. Aloe perax and other species are known as a Cape. Okay, all these species belong to family Liliaceae. Aloe barbadensis, Aloe peri, Aloe perax. Okay, so Aloe barbadensis is nothing but the Curiaco aloe. Aloe peri is nothing but the Socotrain aloe. Aloe perax is nothing but the Cape aloe. Remember. So cultivation collection is not important. Preparation of aloe. Yes. Preparation of aloe. There are different varieties of aloe which is prepared, and that is known as a prepared aloe. And the process of their preparation, depending on the process of their preparation, they are marketed. Okay. So first one is a Barbados or Curiaco aloe. Barbados or Curiaco aloe, Cape aloe, Socotrain aloe, Zingiber aloe. All these are nothing but the dried juice of aloe. Okay. But their preparation method is different. उनका बनाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो बारबेडोस और क्यूराको aloe कैसे बनता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो उसका लीव्स कट करके उसका कलेक्शन करना पड़ेगा लीव्स, तो उसको कलेक्ट करते हैं केरोसिन टिन में, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, दे आर प्लेस्ड इन द वी शेप्ड वुडन, एक लकड़ी का बक्सा होता है वी शेप का, उसमें वो रख देते हैं कट किए वाले जूस, ताकि वो एलोवेरा का जूस ड्रेन हो जाए उस लेस में, किसमें, वो लकड़ी के इसमें बॉक्स में, ठीक है। देन दिस जूस इज कलेक्टेड एंड इवेपोरेटेड टू थिकनेस इन द कॉपर पैन एंड इट इज मार्केटेड अंडर द नेम ऑफ बारबेडोस और क्यूराको aloe. देन केप aloe. सो इन द सिमिलर वे आपको कट करना है एलोवेरा का, एंड एलोवेरा का लीव्स कट करना है। उसके बाद में उसको क्या करना है, यू हैव टू अरेंज these leaves in a circular manner in the basin shaped depression in the
सॉइल, कि आपको एक गड्ढा खोदना है, गड्ढे में क्या करना है आपको, गड्ढे में उसका स्किन डालना है, किसका, गोट स्किन, गोट्स का स्किन, उसका उसे ये मतलब उसका लेयर बनाना है गोट स्किन का गड्ढे में, और उसके बाद में ये लीव्स वहाँ पे रख देने हैं ताकि पूरा की पूरा जूस उसका निकल जाए। उसके बाद में जूस कलेक्ट करके आपको उसको हीट करना है आयरन केटली में, ताकि बाद में उसका सॉलिडिफाई बन जाए। And Socotra aloe juice is collected in the same manner in the skin of goat and aloe to solidify. Then ginger aloe same like Socotra aloe, but the source of the leaves of aloe is unknown. That is not ginger. So it is just a preparation of aloes. Now microscopic content. So aloetic cells are there, which are yellow in color, and they are viscous and they consist of aloe gel. Okay. So aloetic cell consists of highly viscous yellow juice known as aloe gel. Again, along with this aloetic cell, it consists of calcium auxiliary crystal. And okay, so this is just एक बार GPAT 20 में क्वेश्चन आया था कि येलो कलर ऑफ एलोवेरा जूस इज ड्यू टू so aloetic cells. So it is due to the aloetic cells. Aloetic cells, they are highly viscous yellow juice that is known as the aloe gel. And aloetic cell consists of this yellow aloe juice. GPAT 20 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। नाउ उसकी केमिकल टेस्ट कौन से है, एंथ्रासियन ग्लाइकोसाइड्स, इसके लिए ऑब्वियसली इसका बहुत सारा केमिकल टेस्ट है, अपन देखेंगे बाद में। यहाँ पे ये जो एलो है इसमें C ग्लाइकोसाइड्स होता है, दैट्स व्हाई इट विल गिव पॉजिटिव ब्रॉड ट्रैकर टेस्ट, राइट। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एलोवेरा? अगेन दिस एलोवेरा इज अ पurgative, it is an ingredient of benzoin tincture or flowers blossom of benzoin. Again, this aloe vera is used in the cosmetics, skin care product. It is an anti-inflammatory. इसमें क्या होता है, एलोवेरा के जूस में सैलिसिलिक एसिड भी होता है, so that's why सैलिसिलिक एसिड की वजह से it is an anti-inflammatory also. That's why वो लड़कियां अपने गालों पे लगाते हैं उसका एलोवेरा, क्यों, ताकि पिंपल्स ना आ जाए। खाने में ध्यान नहीं देंगी, खाने में बहुत सारा कुछ ऑयली वगैरह सब खा लेंगे, लेकिन वो बाद में पिंपल आने के बाद वो एलोवेरा लगेंगे, तो उसको आने ही मत दो ना, पहले खाने को कंट्रोल करो। कॉस्मेटिक में इसका यूज होता है, इट इज एक्सफोलिएटिंग, एक्सफोलिएटिंग मींस इट विल रिमूव योर डेड सेल्स, दैट इज एक्सफोलिएटिंग। इट इज आल्सो स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस प्रोडक्शन, so that's why it is acting as a exfoliating also. So it is also used in the treatment of burns and wounds, is aloe vera. Now we'll see chemical test for aloes. There are different chemical tests for aloes. Okay, so आपको करना क्या है कि एक जनरल टेस्ट के लिए आपको 1 ग्राम पाउडर लेना है एलोवेरा का, और उसको वाटर में 1 ग्राम पाउडर लेना है एलोवेरा का, उसको बॉईल करना है 10 ml वाटर में, उसको केसल कर डाल के फिल्ट्रेट करना है। नाउ ये जो फिल्ट्रेट बन गया आपका, वो फिल्ट्रेट यूज करना है आपको डिफरेंट केमिकल टेस्ट के लिए। सो 1 ग्राम ऑफ पाउडर 10 ml of water, boil, filter with केसलकर and use filtrate for different taste. Now this bromine test is important. So now filtrate plus bromine, freshly prepared bromine solution. So filtrate plus freshly prepared bromine solution, you will get a pale yellow precipitate of tetrabromoline. तो यहाँ पे टेट्राब्रोमोलिन फॉर्म होता है, ब्रोमीन वाटर प्लस, मतलब जो भी आपका बारबेलोइन होता है वो बारबेलोइन ब्रोमीन के साथ कंबाइन होता है, टेट्रा बारबेलोइन बनता है। शोएन-टेंटन्स टेस्ट, इट इज आल्सो नोन एज बोरैक्स टेस्ट। इसमें क्या है, फिल्ट्रेट जो है इसके साथ में आपको बोरैक्स के साथ चेक करना है, और उसके बाद में फिल्ट्रेट प्लस बोरैक्स चेक एंड एड अ फ्यू ड्रॉप इन अ वाटर, another test tube containing water, so you will get a green fluorescence. These two tests are the specific test for identification of aloe, bromine test and this borax test. Okay, now there are different tests to identify different variety of aloe, which is not much important. इसमें कौन सा कलर आता है, कौन सा कलर रहता है, ये इतना याद नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, there is one test known as nitrous acid test. In that sodium nitrate with acetic acid is used, then nitric acid test is used, and this one is important. कौन सी, Piperelline test, or it is also known as Clunge isovareline test. This test is important. Piperelline test or Clunge isovareline test. So it is a specific test for barbeloin. That is known as a Clunge isovareline test, Piperelline test or Clunge isovareline test. So ये बाकी का जो है उतने important नहीं छोड़ दो।
Now this is aloe vera leaves. Okay, so in that you will have imodine dianthrone and imodine anthrone. Imodine anthrone is a single structure. अगर डबल बनता है तो उसको बोलते हैं इमोडिन डायंथ्रोन.